चाले सबके, उम्मीद करता हूँ ठीक ही होगा। तो ये हमारा एपिसोड 5 पार्ट 2 है, जिधर हम निखिल सिंह की वॉलमार्ट में जर्नी जानेंगे एज एन एसडी इंटर्न अलॉन्ग विद एफटी। तो हाय निखिल, कैसे हैं आप? I'm fine. How about you? आई एम गुड। सो इन द फर्स्ट पार्ट हमने जाना कि निखिल की बैकग्राउंड, निखिल की इंटर्नशिप जर्नी एट क्रिस्टल, उन्होंने अपने प्रोफाइल को कैसे डेवलप किया मेजरली इन द फील्ड ऑफ एआई एंड पाइथन। उसका उन्होंने कॉम्पिटिटिव कोडिंग की C++ में, जस्ट बिकॉज इट हैज़ मोर कॉम्प्लेक्सिटीज और उसमें बहुत चीज़ें हैं सीखने को। उसका इन्होंने crystal.ai में समर इंटर्न किया इन द समर ऑफ 2021, इधर में इन्हें ऑफर था quality assurance team. He wanted to move into a development role, so that's why he was not able to get a role. So अब जानते हैं निखिल की जर्नी इन द 4th year campus placements. तो हाय निखिल, तो प्लेसमेंट कब से शुरू हुई, क्या क्या स्टेप्स थे, आपको कौन कौन से कंपनीज में चांस मिला, आप अपनी जर्नी बता सकते हैं? So I remember exact date कि जब प्लेसमेंट शुरू हुई थी, because 14th of July was the first company, Microsoft. It was surprising कि Microsoft came back again because Microsoft already intern season में आ चुकी थी and nobody expected कि Microsoft will be back again. So it started on 14th of July and I remember giving the exam, but again I don't know what happened. I solved all the 3 questions and I did not get an interview call. And after that there were multiple companies. So, if I can give you an overview कि VIT placement कैसे कराता है, so जब first 2 months होते हैं, for 1.5 months, उनको वो बोलते हैं slot 1 companies. And slot 1 companies are the companies जो भाई एकदम top level companies होती हैं with the highest CTC above 20. Microsoft had a CTC of about 45. So वो सबको पता है कि Microsoft अभी मतलब gives a CTC of 45 to its fresher. So slot 1 की companies होती हैं, they had मतलब बहुत ही शानदार CTC होती है. So and the thing about slot 1 is कि you can sit in any number of companies and you can even get multiple offers. Like if I can get multiple offers from company X, company Y, company Z also, but at the end मुझे एक ही choose करना है. So this is all about slot 1. So I remember slot 1 की placement शुरू हुई थी 14th of July से, when Microsoft came, and I gave the test, no interview call. And the same happened for a few set of companies like Morgan Stanley भी आई, PayPal आई, Wells Fargo आई, and there were some others, like there was good startups as well, जैसे उड़ान आई थी, then you have Work India. Work India आई थी. So there was a major difference again, as I told in the previous part, कि when startups come to you to hire you, उनका focus जो होता है वो majorly dev part पे होता है rather than the DSA part. और वो हम सबने देखा जब उड़ान और वर्क इंडिया के पेपर्स हो रहे थे. जब वो उनका जो राउंड 0 था, it was not based on DSA and stuff. उनका जो राउंड 0 था, it was purely based on कि वो क्या चाहते हैं, उनका रोल क्या है, जो जिस रोल के लिए वो आए हैं. So this is what I told in the last video कि if you want to get placed, if you want to get an internship, you have to have a proper combination of both being a developer and being, a competitive coder. So I remember कि जो पहला इंटरव्यू कॉल मुझे आया था, it was from one of the toughest company to crack, और वो था D-Shaw. So and it was surprising to me because I had the least hope कि if any company can call me for an interview, वो होगी D-Shaw. But they called me, and D-Shaw had this reputation of taking the best competitive coders out of us. I remember, let me give you a stat. जब D-Shaw intern में आई थी, 1,500 people sat for round 1. 1,500. And they selected 15 for interviews. 1%. And out of those 15, उन्होंने 2 select किए थे internship के लिए. So it is the toughest company to crack, and I got the interview call, and after the interview I realized why it is called the toughest company to crack. Because as soon as the interview started, I was given a DP problem with bit masking, and I was like, okay, what? So वो toughest interview था आज तक का, सीधे bouncer. So it's like ये क्या? So और उनका जो सिस्टम है इंटरव्यू का वो भी अलग है, क्योंकि देयर इज समथिंग नोन एज कोड पेयर. हैकर रैंक पे कोड पेयर, उसमें क्या रहता है कि आपका इंटरव्यू, आपको एक आफ्टर आपका इंटरव्यूअर आपको एक सवाल देगा और आपको वही कोड करना है उसके सामने, एंड द कोड शुड रन ऑन ऑल द टेस्ट केसेस. नॉर्मल इंटरव्यू में क्या रहता है, यू कैन रन इट ऑन योर ओन, मतलब वो बोलते हैं स्क्रीन शेयर करो, रन इट ऑन योर ओन आपका IDE. बट वहाँ क्या था कि हैकर रैंक पे चल रहा है,
So I was still able to code for 16 out of 17 test cases. एक fail हो गया था due to time complexity error. And after that उन्होंने मेरे से core पे सवाल पूछे थे, OS पे, DBMS पे. But I got rejected because there were better candidates than me. So this was about DShaw. I got rejected from DShaw after round 1 only. After round 1 of interview, I did not go forward with round 2 and round 3. उसके बाद I guess 1 week later Walmart आई थी for placement. We got a call कि Walmart आ रही है, please register. And then I remember 3rd of August मेरा round 0 था. And round 0 was for about 1 hour. It was for 1 hour. We had 10 questions related to core subjects and 2 coding question. So in this time I was lucky, I would say, or like I was able to solve all the questions, both सारे दोनों को coding question run हो गए थे. 10 के 10 MCQ. I was sure I was right. So I was sure कि interview call तो आएगा ही. And luckily this time I got an interview call from Walmart. So it started from interview started from 4th of August. So अब interview pattern इनका ये था कि they have 2 technical interviews followed by 1 managerial interview, and after that you get a final offer letter or not. It depends all on that. So जो मेरा first technical interview था, it was taken by a senior software engineer again. He had around 10 years of IT experience. So again, it was again a very unique kind of interview and very interesting interview, because the first thing that he said when he came कि I am bored, कि सब लोग एक ही टाइप के जवाब दे रहे हैं and everything is so monotonous, so don't make this interview monotonous. I was like, okay, we'll not make this interview monotonous, we'll do something better about this. So वो पूरा मेरे प्रोजेक्ट पे था. It was all about core subject. It was all about like एक ही DSA का क्वेश्चन पूछा था. He asked only me 1 DSA question, and वो DSA का क्वेश्चन हमने उल्टा किया था एक तरीके से. In a normal interview हम डीएसए के क्वेश्चन को ब्रूट फोर्स अप्रोच से शुरू करके ऑप्टिमल अप्रोच पे जाते हैं. वो वाले डीएसए क्वेश्चन में ही आस्क्ड मी द ऑप्टिमल अप्रोच, एंड देन ही आस्क्ड मी कि इसको और कैसे खराब कर सकते हो अप्रोच को, बिकॉज वी बोथ वांटेड द इंटरव्यू टू बी समथिंग डिफरेंट. सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट दैट इंटरव्यू. सो जब ये इंटरव्यू खत्म हुआ, like around 1.5 hours later, I was called for my second interview. And the thing is, with these MNCs or like every MNC, they read your resume. उसके हिसाब से they set up your interview. So when they looked at my resume, it is majorly based on AI, ML and stuff and data science. So I was paired up with an interviewer who was the senior data scientist at Walmart. So when वो interview जब शुरू हुआ, I was bombarded with data science questions, from basic math to the algorithms and everything. And again, I liked it because I had done it. The first of all, to all the juniors, never lie on your resume, क्योंकि वो पकड़ लेंगे. Only write those things on your resume जो तुम्हें पता है कि you are strong at and you can do and you can talk about that. So the first 30 to 35 minutes हमने पूरे मेरे प्रोजेक्ट से बात की second round में, and I told him everything. But even before the interview started, सर ने मुझे पहले बोल दिया था कि ये DSA focus round रहेगा. So I'll be giving you question और तुम्हें solve करना. So I was like, okay. So after that 35-40 minutes, जब मेरे पूरे project की बात हो चुकी थी, we started solving DSA question, and they were not that tough. First one was Pascal's triangle. I remember. So he did not tell me कि Pascal triangle है. He was like कि this is a pattern. Please can you print the pattern? So when I looked at the pattern, I was like कि ये तो Pascal's triangle है. So he was like, okay, can you code it? So I was asked to code it, and I had to run that code in front of him. And he was like कि अपना favorite IDE खोलो, run that code, and I'll give you certain inputs. And you have to like error control भी करना था उसमें, error management भी करना था कि negative आ जाए तो print something else or something like that. So I did that, and fortunately वो first try में run कर गया, no errors and stuff, so I did not have to debug a lot. Second question था find a loop in linked list. Easy question, ये मतलब बहुत ही famous question है. So again, most brute force से शुरू करके optimal से most optimal तक लाना उसको. Last question was a good question. He started talking about probabilities and stuff, because my resume was related to data science. So he was like, you must be knowing maths. So I was like, yes. So it was related to data science, probabilities and stuff. So when this interview ended, just after that, 5 or 10 minutes later, I got a call कि आपका managerial interview होने वाला है. And managerial interview, surprisingly, was the longest interview I had out of these two. It went on about 1 or 1.5 hours.
क्योंकि दैट गाय सर आए, उन्होंने बोला कि वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि शाम के 5 बज रहे थे कुछ, तो लाइक कि बहुत टाइम है, हाँ चलो डिस्कस करते हैं। तो लाइक ओके लेट्स डिस्कस। एंड अगेन अ टिप टू आवर जूनियर्स कि जिस कंपनी में भी आप अप्लाई किए हो, जिस कंपनी में भी आपको इंटरव्यू कॉल आया है, उस कंपनी के बारे में सब कुछ रिसर्च करके जाओ कि वो कंपनी क्या कर रही है और फ्यूचर में उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने करेंटली क्या किया है, क्योंकि एचआर राउंड या फिर मैनेजरियल राउंड में इसी सब पे बात चलती है। सो हमने बहुत डिस्कशन किया कि वॉलमार्ट अभी क्या कर रहा है, वॉलमार्ट आगे फ्यूचर में क्या करने वाला है, वॉलमार्ट ने क्या कभी इस टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा है। एंड इट वाज लाइक अ वेरी सिंपल डिस्कशन। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, ही इज आंसरिंग, ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, आई एम आंसरिंग। सो बहुत ही सिंपल 1.5 hour का डिस्कशन हुआ। एंड एट द एंड on the next day, on 5th of August, I remember around 1:30 in the noon, I got a mail ki congratulations, you have been selected. So this was the end for my placement journey. So everything that I did for the past 1.5 year, I thought ki it bore fruit at the end. So this was all about काम my आ गया placement है journey. फाइनली। Yes. चलो congrats on getting into Uh, Walmart. Walmart is the number one of the Fortune 500 Fortune company. 500 company, yes. बहुत बढ़िया है। So this was Nikhil's journey in placements to Walmart. तो बने रहे हमारे साथ for more placement stories and success stories. मैं उम्मीद करता हूँ आपकी भी जर्नी मुझे कभी कवर करने का मौका मिलेगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना।